की है और इसकी खुशबू भी आप लोग सब देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये हमने बनाई है। तो इनको सामने रखते हुए ना जिस तरह की शख्सियात होती हैं उस तरह बॉटल। Herkese merhabalar. Burak, my first question and my only question for you is, tell us about your experience of the process. आप सबका बहुत अच्छे इंसान हैं। Hepiniz biliyorsunuz, Kuruluş Osman Türkiye'de yaklaşık 5. sezonunda. जैसे आप सब लोगों को पता है कि कुर्लुश ओस्मान जो है वो टर्की में अपना 5वां सीज़न जो है वो ऑन है। Biz başladığımız günden beri Pakistan'da bizi çok sevdiklerini, yakından takip ettiklerini, Osman'ı inanılmaz sevdiklerini biliyorum. स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें पता था कि कुर्लुश ओस्मान जो है वो पाकिस्तानियों की नज़र में बहुत अच्छा और बहुत पसंद किए जाने वाला सीज़न है। Yaklaşık 3-4 yıl önce Ceydat'tan bana bir teklif geldi. और इसके साथ साथ तकरीबन 3 से 4 साल पहले जेडॉट की तरफ से मुझे ऑफर हुई इन्विटेशन। İşte bugün bu çıkardığımız parfümeydi. और आज ये लॉन्च जो हम लोगों ने किया है परफ्यूम, इससे रिलेटेड मुझे 3 से 4 साल पहले ऑफर है। Ben ona şunu sordum, peki bu işi nasıl yapacağız dedim. तो मैंने उनसे पूछा कि इसको हम लोग किस तरह लेके चलेंगे। O bana dedi ki sen hiç merak etme, kendini tamamen bana bırak dedi. तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप कोई टेंशन नहीं लें, आप वैसे मुझ पर छोड़ दें सब कुछ। Çünkü Ceydat'ın sadece Pakistan'ın dünyanın her yerinde markasıyla ilgili yaptığı tecrübeyi gördüm. क्योंकि जेडॉट का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं था, वो मैंने पूरी दुनिया में जो है वो जेडॉट का एक्सपीरियंस देखा। Ama burada önemli olan bir şey var. Tamam. Benim için önemli olan şuydu, ben Ceydat'a söyledim, dedim ki parfüm işi çok kişisel bir şey. O kişiselliği nasıl peki Osman'la birleştireceğiz? Çünkü bütün Pakistan Osman olarak biliyor, Osman olarak seviyor. Biz bunu nasıl bir araya getireceğiz dedim. O dedi ki onu bana bırak dedi ve onunla ilgili bana bütün verileri getirdi. मैंने इनसे पूछा कि अब परफ्यूम जो है सब्जेक्टिव है, हर किसी की एक अलग पसंद होती है, तो परफ्यूम की खुशबू को हम लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तानी अवाम को किस तरह पसंद करवाएंगे और जेडॉट की परफ्यूम को कुर्लुश ओस्मान से किस तरह रिलेट करेंगे। मैंने इनसे ये पूछा तो इन्होंने ये मुझे जवाब दिया कि आप जो है टेंशन नहीं लें और आप जो है ये सब काम छोड़ दें। Ama çok profesyonel ve çok kibar bir adam. Çünkü biz bunu konuştuğumuzda bana şişe tasarımını bile nasıl istiyorsan öyle yapalım. Mesela örnek göstermek istiyorum. Şişeyle ilgili de konuştuğumuzda biz ne yapmamız lazım diye yaklaşık bir 6 ay üzerine konuştuk. और हम लोगों ने परफ्यूम की बॉटल से रिलेटेड ही हमें किस तरह काम करना है, किस तरह डिज़ाइन करना है। भाई हमारा सवाल ये है, अगर को बताएं, पाकिस्तानी भाई तुर्कों से बहुत ज़्यादा ऐसी जा रही है बात, पाकिस्तानी भाई तुर्कों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आगे कैसा लगता है? जब खिलाफत की तहरीक थी, यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहाँ मदद की थी, आज तक तुर्क उसका शुक्रगुजार है। और तुर्की और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो दुनिया भर में एक मिसाली है। अब ये बताएं यहाँ आके कैसा महसूस होता है आपको? पाकिस्तान और तुर्किया की मोहब्बत है, ये ज़रा jazbat से Biliyorsunuz ki Pakistanlılar Türkleri çok seviyor. Pakistanlılar Türkiye'ye çok fazla yardım etmişti ve bunu Türkler de biliyorlar. Bununla beraber işte Pakistan'a geldiniz, nasıl hissediyorsunuz? Var mı bir şeyler paylaşmak istediniz? Çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü dediğiniz gibi bizim ülkemizden de bakış açımız aynı. Ben burayı zaten duyduğumda gelmeyi çok istiyordum. Tabii bugün parfümle birlikte oldu bu. Ceydat bana çok vesile oldu, sağ olsun. Ben çok merak ediyordum. Daha önce gelme fırsatım olmadı bu ilk gelişim. मुझे भी मैं भी इसी वजह से आना चाहता था कि हम लोगों की हिस्ट्री, पाकिस्तान और टर्की की हिस्ट्री में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, एक दूसरे की बहुत मदद की है और मैं हमेशा ही पाकिस्तान आना चाहता था और
इस दफ़ा जो है ये मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, और ये जो है जिसका वसीला जो है वो जे डॉट बना है। Ben bağımızın, o yüzden bugün buradayım ve buraya koşarak geldim. Bütün ekibi bekletiyorum şu an. Herkes çekimi bekletiyor. और हमारे मतलब पाकिस्तान और टर्की के जो एहसासात हैं, रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, वो सेम है और अभी तक सेम है। और मैं इसी वजह से पाकिस्तान जो है अपना सारा काम छोड़ के, अपनी सारी शूटिंग वगैरह छोड़ के, अपने क्रू को मैं वेट करने के लिए कहकर आया हूँ ताकि मैं भी जो है पाकिस्तान को देखूँ। Hatta buraya daha erken gelecektik biz. Yaklaşık 2 sene önce gelecektik. Ama benim kendi işimle ilgili programla ilgili ayarladığım şeyler oldu. O yüzden gelemedik. Yoksa daha da erken gelecektik Pakistan'a. नॉर्मली मुझे 2 साल पहले आना था, लेकिन कुछ स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो नहीं आ सका, तो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे। Sizleri seviyoruz. आई लव यू ऑल। अच्छा बुराक साहब, कुरुलुस उस्मान की सीज़न है, इतने सारे कोई फिल्म बनाए पाकिस्तान में भी islami tarih pe. İki sorusu varmış. Birincisi işte Ceydat'ın kamışlar var, yani bizim yer kıyafetlerimiz çok meşhur, çok fazla seviliyor burada. Siz de kullanıyor musunuz ya da seviyor musunuz ya da kullanacak mısınız? Ceydat bana onlardan verdi zaten, bende var. J-Dot ने मुझे कमीज शलवार जो है वो काफ़ी दिए, मेरे पास हैं। 2 sene önce verdi. मुझे 2 साल पहले मैंने दिए थे। Hemen tanışır tanışmaz verdi. नहीं, वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करने का भी कोई है इरादा? वो पूछा जरा, कोई ऐसा तारीफ? İkinci soru, mesela Pakistan'ın da film şeysi çok fazla gelişme gösteriyor. Bununla ilgili biz de hani Kuruluş Osman gibi tarihi filmlerimiz falan yapıyoruz. Bununla ilgili yani Pakistan'da çalışmakla ilgili bir projeniz ya da bir planınız var mı? Ben çok isterim. Şu an tabii Osman devam ediyor. 5. sezonundayım. Daha ne kadar gidecek bilmiyorum. Ama keşke birlikte bir şeyler yapabilsek. Ben çok isterim. Neden olmasın? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। और फिलहाल जैसे आप लोगों को पता है कि कुरुलुश ओस्मान का जो है वो 5th सीज़न चल रहा है, और कब तक कंटिन्यू रहेगा इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। Bu Ceydat'la birlikte ilk adım olsa keşke bu ve başlasak yani. Yapsak. ये हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा पाकिस्तान में J-Dot के साथ, और इंशाल्लाह आगे भी हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है, मेरी तारीख है बहुत लंबी जो रूलर है रहेगा उसका, तो आपकी वो रूल अदा करते हुए Osman böyle çok büyük bir lider, çok önemli bir şahsiyet. Bu rolü oynarken sizde bir değişiklik oldu mu ya da bir Osman Bey ile beraber hani onlarla ilgili bir karakterinizde bir değişiklik oldu mu? Ben oyuncuyum neticede. Yaptığım iş gereği aslında çok büyük bir değişiklik olmuyor hayatıma dair. Sadece şu oluyor, bir liderin hayatını oynamak kolay bir şey değil. जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक एक्टर हूँ, तो मतलब एक कुरुलुश ओस्मान की एक्टिंग करना, उनका रोल लेना एक मतलब कोई आसान बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन मेरी अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस जो है वो मेरे में नहीं है एज अ प्रोफेशनल। Yani şuradan düşündüğünüzde bir hayal kuruyorsunuz, sonra bu hayali gerçekleştiriyorsunuz ve bu yaklaşık 600 yıl süren bir imparatorluğa dönüşüyor. Bu fikri hayal etmek bile zorken hayal ediyorsunuz, gerçeğe çeviriyorsunuz, böyle bir devlet kuruyorsunuz ve o kadar insan bunun arkasından geliyor. Bugün Pakistan'da da geliyoruz, bunu konuşuyoruz. O yüzden aslında ne kadar büyük ve ne kadar birlikte olduğumuzu gösteriyor. अब आप लोगों को पता होगा कि सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत रह चुकी है, और उनके लीडर उस्मान भी बहुत बड़ी शख्सियत रह चुके हैं। मतलब ये चीज़ को एक तसव्वुर करना भी इतना मुश्किल है, तो हम लोग जो है उसको तसव्वुर करते हैं उसके रोल में, शूटिंग में, और ये सब जो है वो ऑब्वियसली आसान नहीं होता। करेक्टर में आया। İlk önce Pakistan'a hoş geldiniz. Mesela Biri
adaletli bakmamı sağlamış olabilir bana kattıklarından biri. कुरुलुश ओस्मान की सबसे मतलब खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि अदालत, इंसाफ। तो मैं इस रोल को प्ले करते हुए कुरुलुश ओस्मान की तरह जो है इंसाफ पसंद जो है ज़्यादा होगी। ये आ गई ना तब्दीली, ये तब्दीली आ गई। जी अपने राइट पे देखिएगा प्लीज इधर। Yani 18-19 yıldır bu işi yapıyorum. Çok fazla 23 tane işim var böyle. Yani aslında bu işte bir şey seçmek de olmuyor. Ne oyunculuk böyle oluyor, ne bundan sonra yapacağınız şey. Yani şu diziyi oynayayım, şu karakteri oynayayım gibi bir şey yapma şansınız yok. Biraz hayatta önünüze çıkıyor, fırsat olarak çıkıyor. Siz ondan sonra değerlendiriyorsunuz. Açıkçası şu an bilemiyorum, şu an tamamen Osman'ın duygusundayım ve Osman'ı yaşıyorum. Zaten burada da Osman'ın sevgisini görüyorum. अब मैं इस फील्ड में जो है वो 18 से 19 ईयर से हूँ और तकरीबन 20 to 25 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर चुका हूँ। और अब जो है मैं फ़िलहाल सिर्फ कुरुलुश ओस्मान के ही कैरेक्टर में हूँ और मैं इसी को फील करना चाहता हूँ। फ़िलहाल जो है आप लोगों को ये भी पता है कि मतलब ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं इसमें हम लोग सेलेक्टिव नहीं हो सकते, तो जो हमें ऑफ़र्स आती हैं उस हिसाब से हम लोग जो है कंपेयर करते हैं और फिर जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ देखते हैं। Hayalim çok. Hayalim çok ama ben ileriye dönük planları çok seviyorum. मेरा मतलब मैं करना चाहता हूँ दूसरे कैरेक्टर्स, लेकिन मैं फ्यूचर के हिसाब से जो है ज़्यादा मतलब सोचने वाला इंसान नहीं हूँ, Hayatında göstereceğini bilemezsiniz çünkü fazla plan yapmak. क्योंकि ज़िंदगी हमें क्या बताएगी वो हम लोग नहीं जान सकते, तो ज़्यादा प्लानिंग करना भी ठीक नहीं होगा। İşte biz Pakistanlılar Türkiye'ye gitmeyi çok seviyoruz. Türkiye'yi bir turistlik yer olarak görüyoruz ve çok fazla giden Pakistanlılar var. Ama gördüğümüz üzere Türkiye'den buraya gelen Türkler turist amacıyla çok az. Bunlar yani siz buraya geldikten sonra bu Türkiye'den Pakistan'a gelme sayısı ve turistik olarak artacak mı? Arttıralım, ben birkaç defa daha geleyim. इसको जो है इसको हम लोग हमें बढ़ाना चाहिए। मैं 1-2 दफ़ा और आऊँगा फिर ये बढ़ जाएगा। Belki ilk adım olur. शायद ये स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोगों का। भाई वो सवाल मेन टारगेट क्या है? किसी किसी फेम एक्टर को आप लोग करना चाह रहे हैं, उसका किरदार अदा करना चाह रहे हैं? ड्रामा या फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। कास्टिंग, ये कास्टिंग फिल्म है ना, ड्रामा, तो इसमें इन्होंने जो है उस किरदार को निभाने Bir araştırmanız falan oldu mu? Çok fazla oldu ama ben bunun öncesinde de zaten tarihi bir iş yapmıştım. Yine Osmanlı Devleti'nin başka bir padişahının olduğu Muhteşem Yüzyıl diye bir dizimiz vardı. Onda da zaten ben yine bir tarihi karakteri canlandırmıştım. O yüzden aslında Osmanlı'ya hakim. मैंने इससे पहले भी जो है वो सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह का रोल किया था। मुहतशम यूज़िल के नाम से हमारा प्रोजेक्ट था और सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री से भी मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ और मैं जैसे पहले रोल कर चुका हूँ तो मुझे काफ़ी जो है वो पता है। Yani bir araştırma tabii ki yapıyorsunuz bununla ilgili, fakat size gelen senaryo üstünde kendi hayallerinizi kurmanız lazım. ऑब्वियसली आप लोग जो है मतलब हम लोगों को इसका मुताला करना होता है, रिसर्च करनी होती है, लेकिन जो आप लोग मतलब जो हमारी लाइफ है उसके ऊपर भी जो है हमें वर्किंग करनी होती है। Yani gerçek karakterin yaşadığı hayat hikayesi üstünden birazcık kendi yorumunuzu katmanız lazım. Sizce olanı seyirciye izletmeniz lazım. क्योंकि जब किसी का हम कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उनकी जो शख्सियत होती है उसमें अपनी शख्सियत ऐड करके उस पर कमेंट करके और फिर जो है वो हमें जो देखने वाले होते हैं उनको जो है वो दिखानी चाहिए। Seyirciyle bağ da zaten öyle kuruluyor. और जो मतलब हमारी ऑडियंस है उनसे रिलेशन भी जो है वो कनेक्शन भी इसी वजह से होता है हम लोगों का। Tarihi olan karakterin üzerine siz kendinizden neler ekliyorsunuz?
क्योंकि एक हिस्ट्री का कैरेक्टर है, उसमें आपकी उसमें हमारी जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन होती है, इस हिसाब से। Ben daha çok tabii ki Osman üzerinden duymuştum bunu. Muhteşem Yüzyıl üzerinden duyduğum dönemde tabii olarak şimdi şöyle oluyor. Biz orada bir dizi yapıyoruz ama bunun üzerinden 2 yıl geçtikten sonra buraya geliyor. O yüzden biraz daha ben daha geç duymuş olabiliyorum onunla ilgisi. O yüzden yani aslında şöyle, Türk dizileri dünyada şu anda Amerika'dan sonra 2. sırada. O yüzden çok güçlüyüz bu anlamda. Ve bununla ilgili de o gücümüz, mesela bugün burada hep birlikte bunu konuşabiliyoruz. Bence önemli şeylerden biri bu. Birlikte aynı şeyi paylaşıyor olmamız. पाकिस्तान में या फिर जैसे हम लोग अगर कोई रोल प्ले करते हैं या जहाँ शूटिंग हो जाती है तो टर्की के बाद जो है यहाँ पे पाकिस्तान में 1 या 2 साल के बाद आती है मिनिमम ऑन एयर। तो मैंने जो है ज़्यादातर उस्मान के बारे में ही सुना है कि यहाँ पे ज़्यादा पसंद की गई है पाकिस्तान में। मुहतशम यूज़िल मीरा सुल्तान के बारे में इतना नहीं सुना। और हम लोग जो है मतलब टर्की की इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका के बाद 2nd नंबर पे आती है। तो इस फील्ड में जो है हम लोग काफ़ी आगे हैं और इस वजह से जो है काफ़ी मुल्कों में जो है कुछ टाइम के बाद ऑन एयर होने की वजह से मुझे जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ा लेट पता चलता है। Onun bir süre için Pakistan'a gelip de Pakistan'ı gezmek ve diğer yerlerde seyircilerle görüşmek istediğiniz bir plan var mı? Hemen söyleyeyim. Aslında şimdi ben 6 gün diziyi çekiyorum. 1 gün boşum var. Burası için 2 gün ayırdım. Bu bir. İkincisi biz bugün aslında gideceğiz. Ceydat'la birlikte bugün bir tane molde buluşacağız. Hayranlarımızla birlikte. Bu basın toplantısı diye buradayız. Ama devamında bugün ve yarın molde zaten bizi sevenlerle, halkla birlikte olacağız. Ben de onları çok merak ediyorum. Onların sevgisini biliyorum ve yakından görmek istiyorum. अब मैं आज इस दफ़ा जो है वो 2 दिन के लिए आया हूँ और वीक में जो है 6 डेज़ मैं शूटिंग करता हूँ। एक दिन जो है वो मेरा ऑफ होता है। और लेकिन इस काम के लिए पाकिस्तान में जो है मैं 2 दिन का ऑफ लेकर आया हूँ। और अब जो है यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हम लोग मॉल में ऑडियंस से मिलेंगे और मुझे जो है इंतज़ार है उन लोगों का और मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तानी आवाम को और पाकिस्तानी ऑडियंस को। Yani şöyle, dediğim gibi bu tamamen iletişime nasıl mesela Ceydat geldi, parfümle ilgili biz konuştuk. Bununla ilgili de benim konuşmam lazım, toplantı yapmamız lazım. Onun üzerine bir şeyler söyleyebilirim aslında. Yani ben tabii ki oynamak isterim ama tamamen proje işi, biraz yaklaşımla ilgili. Yani Pakistan'dan bir alıp görürsem neden olmasın? ये जो है मतलब मैं प्ले करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। लेकिन अब जैसे J.Dot हमारे पास आया था तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता या मैं इसमें वो नहीं हूँ। तो ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफ़र आएगी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ से कोई ऑफ़र आएगी तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। Ceydat gibi birilerinin ön plana çıkıp bize teklifte bulunması lazım, üzerine konuşmamız lazım. Yoksa ben şunu atıyorum, biz mükemmel bir reklam çektik. Yani ekip inanılmazdı, bunu söyleyebilirim. Müthiş bir ekip vardı, çok profesyonel, işini çok iyi biliyordu. O yüzden bence teknik anlamda her şey var, gerisi yapılabilir, iletişimle ilgili. जैसे J.Dot मेरे पास आया था, हम लोगों ने जो है एक एड प्ले किया, उसकी शूटिंग की। तो इसी तरह से जो मेरे पास अगर कोई ऑफ़र आ जाती तो मैं प्ले करना चाहूँगा। और J.Dot की जो है सारी क्रू और सारा स्टाफ जो है बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने काम किया और हम लोगों ने रोल प्ले किया, जो एड प्ले किया है उनमें जो है वो J.Dot की प्रोफेशनल टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। Bence bir yerden başlamak lazım. बहुत शुक्रिया। तो फिर हम लोग जो है मिलकर कोई एक हो चुका है सवाल।